How are you, everybody? Good. होली अच्छी तरह सेलिब्रेट किया? गुड। तो शुरू करें? Yeah. So we were seeing testing, types of testing and all those things. Let me share my screen. Able to see my notepad? Okay. So we were seeing about testing. Now we are in the last phase of things. Okay. We are in the state of reporting and metrics. So we are going to see this topic today, reporting and metrics, and then we will go for some live exercises. And tomorrow you're going to have your surprise test from our end. It will be maybe 1 hour of exam or like choose your answers, something like that. So what is reporting? So we have seen the SDLC. In SDLC, we saw SDLC, right? Software testing life cycle. We saw in software testing life cycle, we saw bug life cycle, right? And types of testing, all these things we saw, right? What is testing? SDLC phases we saw, actually SDLC phases, right? And then bug life cycle and lot more, right? So now we are, okay, let me rewind the STLC phase, requirement phase, test design phase, test execution, bug report, sorry, test execution, test log, bug report, or I could say defect tracking. So actually I should say defect tracking. Code generation, right? So we saw all these things. So now we are going to see the test report summary. What is test report summary? Do you have any idea what is test report summary?
I think it's again slow, so I'm just waiting for your answers. Voice nahi aa raha hai. I think you should hear me. I was asking a question. What is report generation? So I'm waiting for your answer. That is where report generation or report. What is report generation? यार मुझे समझ में नहीं आया फाइनल आंसर्स जिसके लिए हम टेस्ट लिखे होते हैं लाइक ही नीड अपडेट्स करेक्शन और नॉट आपका आपका मार्क्स आ जाएगा एक्चुअली एंड वी कैन डिस्कस ऑन द पेपर इफ यू वांट नो टू डिस्कस ऑन द आंसर्स. Okay. A test report summary contains all details of test process at what was tested, what when was tested, how was it tested, which environment it is tested. Okay. Uh, Fine test summary. Okay, test summary. So in general, what will have the test summary is this test report or test summary. One is based on the test cases, one is based on the your execution. Okay. This is based on the preparation of test cases. This is based on the, we have two types of report actually. One is if you are in preparation, test case preparation, okay? Test case preparation phase. And you have test execution phase. We have two phases, okay? In the test case execution phase, we have again two types. One is based on test cases, how many cases were executed, how many cases passed, how many cases failed, and then we will have number of test report summary, number of bugs closed, number of bugs in progress, number of bugs, and also we will say what is the priority, what was the severity of the bug. Do you remember what is severity and priority of the bug? Okay, let me complete this and come back to that. Then in this case preparation phase, we will write number of cases done, number of cases in progress, number of modules pending to write cases. Okay, these we will give to ensure that how are we completing the progress. Where do we stand in no, every day you need to send a status report to your manager or to your no, lead, to your test lead, to tell them what is the status of your work for the day. We usually have a scrum meeting. Okay, we call it a scrum meeting. Mornings we usually have this in general in a lot of organizations. So what we do is we have a scrum master here who will be tracking on the scrum meeting. Is all about no, it will not take much time other than you saying that what is to be done, what was done yesterday, what is the issues and concerns, what are planned today, and is there any no escalations to be done which needs to be highlighted to the management. This is the crisp and very clear outcome of each individual person who is working. That is what the Scrum meeting is. And the Scrum Master will track all the tasks. And you need to update every day EOD by no, EOD or COB. We say close of business or end of the day. No, giving the status what has been done as per the plan. What sort of issues and concerns have been raised.
right? So are you clear? This is your status report, what you are supposed to give as a tester every day. What was being done, what are you doing, what are you planned for the next day, right? This is called test report summary. We report generation. In report generation, this is one kind of report what you can give to your management on everyday basis. In general, report generation will be consisting of like a entire of our application. What is the status of no the total bug report, total execution of cases, overall consolidated report will be shared by the test lead or the test manager based on cumulative no details from all the team members. See, one application cannot be tested by one person, right? You will have 5 people or 6 people or 10 people or 2 people based on the effort required, based on the delivery timelines. So we will consolidate and we will share it to client or the managers to understand the progress of the application, right? Are we clear? Can I move on to the next topic? Next topic, metrics. Can I move to next topic, metrics? Are we clear what is? Okay. What is metrics? What is metrics? What is metrics? कुमार आपको वॉइस क्यों नहीं आ रहा है मेरा? आई थिंक सब लोग सुन पा रहे हैं. Am I audible? I'm asking a question. What is metrics? Is it not clear? Okay, metrics is a measurement, way of measurement. Yes, agree. Of measurement. Then, what are the kind of metrics you can have in software? A lot of metrics to measure. Okay, enterprise level metrics, process metrics, people metrics, project metrics, product metrics. But in general, for us, it would be either if you're working for a project based company, project metrics. If it is a product based company and you are working for a particular product, then it is a product metrics. And then you will have your product or process. You will have your defect metrics separately, right? So in process metrics, it's a normal thing like time taken, what is the cost, what is the resource utility, right? And in product metrics or project metrics, number of defects has been taken, time taken for that no entire testing cycle or development cycle. Each cycle can be measured separately. Number of test cases, passed, failed. There will be a lot of things other than this, like no how many bugs are open in release phase, right? Number of bugs open, number of bugs closed, no what is the severity and priorities, right? And the quality metrics also will be measured. It is quite a lot of things. Measurement is very very important in every stage of life. Where you, how do you measure? It's very simple, right?
If you say the glass water is full, how do you say? Based on the container only we can say, right? So that is how measurement is measured with number. In general, it is measured by the numbers. What is the total no what is the total things delivered, how what is the quality of delivery, right? How many resources were involved, and what is the time taken for the each resource, and they will take what is the profit has come in, right? There will be lot of things which comes in when we talk about metrics, but let's not go to that level. But for a tester, defect analysis is very important. Like you will say the defect age, defect leakage, defect density, and defect distribution. These are the four metrics usually as a tester or from a software development cycle. In the STLC process they take it. तो क्या है डिफेक्ट एनालिसिस का चार है, डिफेक्ट एज, डिफेक्ट लीकेज, डिफेक्ट डेंसिटी और डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक नाम से ही हमको काफी समझ में आ रहा है. डिफेक्ट एज का मतलब क्या है, कब कब वो डिफेक्ट रेज हुआ था और कब वो क्लोज हुआ था. यानी कि मैं आज डिफेक्ट फाइंड आउट करके मैंने रिपोर्ट किया, पर वो कितने दिन हुआ वो बग को क्लोज होने का, वो जस्ट आइडेंटिफाइड एंड क्लोज्ड का जो भी वो डेज है ना, उसे डिफेक्ट एज बोलते हैं. इसके नाते हम मेजर कर सकते हैं कि क्यों इतना देर लगा, अगर अगर बहुत देर लग गया या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है, वो डिफेक्ट साइकिल में डिफेक्ट क्लोज करने में डेवलपर का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये सब एनालाइज करने के लिए डिफेक्ट एज रखेंगे. और डिफेक्ट लीकेज है कि कहाँ से ये डिफेक्ट आया, अगर रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं हुआ या डिजाइन फेस में प्रॉपर से नहीं हुआ, किस फेज से ये डिफेक्ट लीकेज शुरू हुआ, मतलब उस फेज में हमने प्रॉपर से वो रिक्वायरमेंट ठीक से पढ़ा नहीं या ठीक से उसे डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ. सो फ्रॉम विच मॉड्यूल द डिफेक्ट डेंसिटी हैज बीन there, what is the kilo lines of impact, कहाँ से है, right? And comes your defect distribution, which phase से and कितना application से क्या density, what is the distribution it has happened to the application is your density, number of bugs in the module divided by number of bugs in the application into 100, because it's measured in the percentage. These are all just mathematical calculations which we usually do it. There is a standard templates in the across the organizations where you just feed in the numbers, it automatically gives you the value what exactly it stands at. So this is important for you guys to know what are all the in part of testing, what are the metrics we do. So these are the four metrics which we need to clearly understand. Am I clear? यहाँ तक क्लियर है मैट्रिक्स का. Are we clear in the matrix? Kumar, repeat करने क्या? Okay, no problem. See, metrics is something you measure. You measure how is it going, what is the progress happening, or when it is closed, how did it go well, right? For that you need to measure, because you need to keep improving your process, your deliverability, everything. So that is where metrics is very very important. So we have mainly, don't think more metrics is at this stage. For us, let us deal with defect metrics, which is all about, which is in the notepad: defect age, defect leakage, defect density and defect distribution. Defect age का मतलब क्या है, कब आपने बग को रिपोर्ट किया और कब बग क्लोज हुआ.
कितना कितना समय लगाया, वो ड्यूरेशन जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे डिफेक्ट एज, यानी कि did it take for 10 days, did it take 1 month or 6 months, or what is the duration after reporting a bug it got closed, what is the duration it took to get the bug closed, that's the defect age. defect लीकेज का मतलब है किस मॉड्यूल से वो इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से वो लीक हो रहा है, इस बग कहाँ पे लीक हो रहा है, वो डिफेक्ट लीकेज है। डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब है जब ये बग बग फिक्स कर रहे हैं कितना लाइंस ऑफ कोड इम्पैक्ट हुआ, वो डिफेक्ट डेंसिटी है। लाइंस ऑफ कोड कितना इम्पैक्ट हुआ फॉर ए डेवलपर, वो डिफेक्ट डेंसिटी है। उतना डेप्थ कितना लाइंस ऑफ कोड को चेंज करना पड़ा लॉजिक, वो डिफेक्ट डेंसिटी है। डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एप्लीकेशन का जो पर्टिकुलर फेज है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन दैट मॉड्यूल बाय नंबर ऑफ टोटल बग्स in the application is your defect density. It's a mathematical formula into 100 to find the percentage of the density. Are clear? Should I repeat again, or you have any doubts in that? Anybody? Any doubts? क्या हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जा सकते हैं? Can I move on to traceability matrix then? What is traceability matrix? उसका पर्पस क्या है? मैम स्टार्टिंग वाला, because your voice not coming to me. कुमार वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? सबको मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं? और स्टार्टिंग वाला का मतलब आप हम तो इसी से स्टार्ट किया था, प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, और था हम लोग रिपोर्ट समरी पे बात कर रहे थे, टेस्ट रिपोर्ट एंड टेस्ट समरी। ये रिपीट करना है आपको? शुड आई रिपीट दिस? My voice clear to everybody? Can I have an S from everybody? Is my voice clear? ओके कुमार, आई थिंक आपने यस जो बोला वो तो ये रिपोर्ट समरी का है। ओके ओके, रिपोर्ट समरी में दो तरीके का रिपोर्टिंग हो सकता है। एक है टेस्ट केस प्रिपरेशन फेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन फेज पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मुताबिक क्या है, जब आप टेस्ट केसेस लिख रहे हैं उस दिन शाम को when when you are leaving your office, आप लोग स्टेटस रिपोर्ट देके जाना है फॉर योर टू योर लीड्स और योर मैनेजर्स, राइट? सो क्या करेंगे हम, अगर टेस्ट केस प्रिपरेशन फेज पे है वो एप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे, कितना केसेस आज लिखा, कितना कितना केसेस अभी भी पेंडिंग है, कौन सा मॉड्यूल्स अभी लिख रहा है। अगर आपको दो मॉड्यूल्स आपको अलोकेट किया, वो दो मॉड्यूल्स का स्टेटस क्या है, कहाँ पे है आप, वो टेस्ट केस प्रिपरेशन फेज में है, तो अगर ये इसका डेटा देंगे। ओके, अगर आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितना केसेस एग्जीक्यूट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितना अलोकेट हुआ, कितना एग्जीक्यूट किया, कितना पास, कितना फेल है, कितना केसेस पेंडिंग है, एंड इतना केसेस एग्जीक्यूट किया तो कितना बग्स आपने रिपोर्ट किया, ओपन किया, और कितना बग्स आपके रीटेस्ट किया,
रीटेस्ट करने के बाद रीओपन कुछ हुआ तो रीओपन भी लिखेंगे, और बग्स, अगर नंबर ऑफ बग्स क्लोज्ड है तो वो बग्स भी लिखेंगे, राइट. वी विल हैव वन मोर थिंग कॉल्ड number of bugs. Okay, right. So this is what the report you give by end of the day. When you are leaving your office, you will send your status report in this format. Is it making sense? Is it clear? Okay. Is it clear? Can I have a S? Can I go to the next topic? अच्छा, good. हम अब देखेंगे, we will see traceability matrix, right? अच्छा, tell me what is traceability matrix? What is traceability matrix? What is the purpose of traceability matrix? What is traceability matrix? I'm waiting for your answers. ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स गाइस, कम ऑन. कोई भी आंसर नहीं दे रहा है. अच्छा, मैं ये बता देता हूँ. 2 मिनट रुक रही हूँ. 2 मिनट और दे रहा हूँ. अगर पर जी, आप तो डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल से आप जरा इसे सिंपल इंग्लिश में बताइए जो आपको समझ में आएगा. तो डेफिनेशन बोल दिया आपने. नहीं, मुझे इसे नहीं चाहिए. मुझे वेरी सिंपल इंग्लिश से या सिंपल से बताइए मैट्रिक्स क्या है. Kumar, you gave a very right definition. Traceability matrix is a document typically we use to ensure that everything has been covered. Whatever the requirement, in the requirement it has been specified, it is been covered. So that is what the traceability matrix is. Yes, you are 100% right. So traceability matrix is to ensure the coverage of requirement is complete, right? How do we ensure this?
we prepare a document with the following columns. Okay, we use requirement ID, and we use HHL, high level design document, या लो लेवल डिजाइन LLD, लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट का आईडी यूज करेंगे, राइट. दिस इज इफ इट इज एंड टू एंड. अगर टेस्टिंग का मुताबिक है तो हम डिफरेंटली यूज करेंगे. ओके, और हम लोग देन उसके बाद यूज करेंगे टेस्ट सिनेरियो आईडी. उसके बाद है टेस्ट केस आईडी. हम देन उसके बाद लिखेंगे बग आईडी. तो एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक से उसका डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ठीक है, और कोडिंग का भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इट. ओके, and we will say this requirement id is covered in this test scenario id, and this test scenario id is covered in the test case id, and when we executed we had all these bug ids reported to related to this requirement, and whether it is open or closed, what has happened, we will track it. So entire this document will be a proof of execution of coverage is complete from the software company to the clients, stating that none of the requirement ID was missed. Acha, are you able to understand? We are ensuring by giving this document. Screen not visible है. अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, रिक्वायरमेंट आईडी है HLD, LLD, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनेरियो आईडी और बग आईडी. These will be the columns. Okay. और हम आईडीज लिखेंगे, उसके बाद उसको मार्क करेंगे कवर्ड है कि नहीं. आईडीज को लिखेंगे. एक्चुअली वी गिव द आईडीज सो दैट it is easy to track. Okay, this id is the where we need to refer. Tomorrow when the application again has to do some changes, it is very easy to understand the impact analysis using this traceability matrix also. It is not necessary today I have worked in this project, tomorrow I may not be working in this project. So this document बनेगा एक गाइड. कोई भी अगर प्रोजेक्ट में अंदर आ रहा है, ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स तो बहुत इजी होगा. अच्छा, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, इसका डिटेल्स हम इस डॉक्यूमेंट पे देखना है, और क्या है उसका इम्पैक्ट, क्या है, कितना कितना वक्त लगेगा. दिस document will be very helpful as a dictionary for any software requirement or the application what has been developed. Are we clear? समझ में आया? समझ में आया ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का? यस. आप तो सभी यस बोल रहे हैं. मुझे देखना है कल का टेस्ट क्या कर रहे हैं. I'll see it. मुझे एक और दिखाना है. अगर एक चेंज रिक्वेस्ट आया है, ओके, एक चेंज रिक्वेस्ट आया है, वो चेंज रिक्वेस्ट के लिए आपको टेस्ट केसेस लिखना है, तो पढ़ के क्या करेंगे आप लेट मी शेयर ए स्क्रीन. आप लोग केस लिखेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू गाइस विदाउट राइटिंग नंबर ऑफ केसेस. कोई स्क्रीन दिख रहा है? ओपन मेटा चेंज रिक्वेस्ट. एक चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है. ओके, आप ये पहले ये स्क्रीन को पढ़ेंगे. ओके, जस्ट रीड द स्क्रीन और then write the test cases. Read the screen and write the test cases. कुछ स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? Are you able to see the screen?
ओके, स्क्रीन तो विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है? मैम डू नॉट शो द स्क्रीन। ओ एक मिनट, सॉरी, मैं स्क्रीन दिखाती हूँ। एक मिनट। या यही है रिक्वायरमेंट, आपको पढ़ के केस लिखना है। लेट मी सी, सिनारियो एंड टेस्ट केस लिखना है। लिखिए। ऐसे ही होंगे आईटी में। एप्लीकेशन एप्लीकेशन एक्सप्लोर करके केसेस मॉडिफाई करेंगे, बट पहले केसेस शुरू करने लिखने के लिए शुरू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देख के ही करेंगे। ओके, सो आई एम गिविंग यू दैट लेवल ऑफ एक्सपोजर। आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के स्मॉल वर्क ग्रुप का जो भी है, ये मॉड्यूल को पढ़ के आपको केस लिखना है। सिनेरियो और टेस्ट केसेस लिखना है। देखेंगे आप कैसे लिख पा रहे हैं। कर सकते हैं मोबाइल पे, यहाँ पे सिनारियो लिखिए, सिनारियो सेंटेंस लिखिए। आप जैसे टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, वैसा ये टाइप करके मुझे भेज दीजिए। ये सिनारियो है, ये सिनारियो के लिए ये 4 टेस्ट केसेस है, वैसा लिखना है मुझे।
कल आप सबके लिए टेस्ट है, तो जरूर आइए। आए, वो एवेल्युएशन होगा। आपका पहला Q&A का टेस्ट है।